Good morning everyone. Welcome you all in St. Joseph's online classes. This is Sonu Rathor, and today we are going to continue our second part of the chapter of political science, freedom. 11th Humanities, political science, second part of the chapter, freedom. In our first part, we have talked about freedom, the meaning of freedom we have talked, classification of freedom we have talked about aspects of freedom, positive aspect, negative aspect that we have talked, and we have talked about safeguards for freedom. That all we have discussed, that all we have talked. Okay. Now we are going to talk regarding meaning of constraints. What do you understand by constraints? We are going to talk about sources of constraints and why do we need constraints and harm principle. Okay, all these things we are going to talk. So let's start the topic. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टेंट्स? इन आवर प्रीवियस पार्ट ऑफ द चैप्टर आई हैव टॉक्ड रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंट्स. आई मेड यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दैट व्हाई some constraints are there on you. I have given the example of your family members also, that your family members and grandparents put some restrictions on you, constraints on you. So in the same manner we also need some constraints. Constraints are put on us by some dominating factors, है ना? या तो फोर्सफुली आप पर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं या आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं. ओके, सपोज यू कैन टेक द रिसेंट एग्जांपल ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस केस. ओके, व्हाट यू हैव नोटिस्ड कि यू वर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम द योर हाउसेज टू मार्केट प्लेसेज, वेजिटेबल मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, है ना, ट्रैवलिंग, सब कुछ बैन कर दिया गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था, है ना. सो व्हाट यू कैन से, these constraints were put by the central government, है ना. ये सारे constraints आप पर लगाए गए थे. Why these all constraints put on you? Why these all rules put on you? For the benefit of yourself, for the benefit of public. Okay. अगर ये सारे रूल्स नहीं बनाए जाते तो क्या होता? Might be the situation was very horrible. Okay. So किसके भले के लिए क्या? हमारे भले के लिए क्या? Okay. In the same manner, in our daily life also, lot of constraints we have to follow. बहुत सारे constraints हमको follow करने होते हैं, है ना. And what would happen if we would not follow these constraints? अगर constraints नहीं हम लगाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना. सब लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. So that's why we need these constraints. So, okay, let me make it more clear. Meaning of constraints. Meaning of constraints, the restrictions put on someone by any dominating factor, or it may be willingly also. Okay, now we are going to talk about sources of constraints. What sources are there for constraints? क्या sources हो सकते हैं? कौन लगा सकता है constraints को? Your government
एनी डोमिनेटिंग फैक्टर, जैसे आपके घर में कॉन्स्टेंट्स कौन लगाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। इन द सेम मैनर कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर कौन कॉन्स्टेंट्स लगाती है? हमारी गवर्नमेंट लगाती हैं, ओके, या जो रूलिंग पार्टीज होती है वो लगाती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, हमें इन कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें इन रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। And what would happen if we would not follow these restrictions, and what would happen if we absence of constants were there, then what would happen? Okay, so let's discuss why do we need these constants, क्यों ज़रूरत होती है हमें इन constants की। If there would be absence of constant, then what would happen? The society would fall in a chaos. The society would fall in a chaos, अगर restrictions नहीं होंगे तो, है ना। सोसाइटी में सब लोग आपस में लड़ेंगे, वायलेंस होगा, सब लोग आपस में भिड़ेंगे, ओके। सो द सोसाइटी वुड fall in chaos. Next one is, we know that different people live in our country, and different people have their different opinions. There are different differences in their opinions and ideas, है ना। So to sort out their differences, their opinions, we need to put some constraints, and they may fight to, they may compete, they may fight to achieve the scarce resources, है ना। जो resources कम हैं उनको gain करने के लिए they may compete, they may take the way of violence. Next, okay, there are n number of reasons to disagree to each other. There are n number of reasons to disagree to each other. So to avoid the disagreement among the people, we need to put some constraints. That's why we need to put all these constraints, है ना, ताकि लोगों की फ्रीडम बनी रहे, है ना, एक दूसरे से लड़े ना, वायलेंस ना हो, है ना, सिस्टम सोसाइटी केओस में ना आए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चलते रहे। दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टेंट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल देखिए, व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल? Harm principle is given by Johann Stuart Mill. Johann Stuart Mill has given the harm principle. Short में हम इनको मिल कहते हैं, है ना। So what John Stuart Mill said? Johann Stuart Mill said that your freedom can be restrained only for your self protection, meaning if your freedom is harming to someone else's freedom, then your freedom can be checked, your freedom can be restricted. Are you getting my point? If your freedom is disturbing someone other's freedom, your freedom is snatching someone's other's freedom, then your freedom can be restricted. Are you getting my point? I have already given the example. Suppose in the name of freedom आपका मन हुआ कि मैं तो रात को 12 बजे उठकर 1 बजे उठकर तेज साउंड में डीजे जो है चलाऊंगा, सपोज, है ना। एंड व्हाट वुड यू से कि आई हैव अ फ्रीडम। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल? वुड यू बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग? आप ऐसा कर पाओगे? आप कहोगे कि आई हैव अ राइट टू फ्रीडम, सो आप मार्केट में गन लेकर निकल जाओगे, मार्केट में स्वॉर्ड तलवार लेकर निकल जाओगे और आप कहोगे कि आई हैव अ फ्रीडम। सो इज इट लाइक दैट? Is it the meaning of freedom? No, not at all. Okay, so
your freedom is making puzzle to someone. Okay, your freedom is harming to someone else's freedom, then it can be restricted. Are you getting my point? अगर आपकी फ्रीडम किसी को परेशान कर रही है, किसी दूसरे की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, then your freedom can be restricted. Are you getting my point? तो होगा क्या ऐसे केसेस में? फिर आपका जो नेबर है वो आपको समझाएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, आपको समझाएगा कि देखो भाई, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ऐसा नहीं करते हैं। सब लोग सोए हुए होते हैं और आप जो है ऑर्केस्ट्रा बजाते हो, डीजे बजाते हो रात को 12-1 बजे तक, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो फर्स्ट ही विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू वुड नॉट एग्री, आपको समझ नहीं आई बात, देन फाइनली व्हाट ही वुड डू, ही हैज़ अ राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप उनकी फ्रीडम को परेशान कर रहे हो, आप उनकी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम को आप स्नेच कर रहे हो, है ना। सो दिस इज द हार्म प्रिंसिपल given by John Stuart Mill. Okay, if your freedom is troubling to someone else's freedom, then your freedom can be restricted. Okay, this was all in this chapter. ये सब कुछ था. I hope you understood all the concept of this chapter. If you have still some doubts and queries, then do let me know in comment section. Thank you. Have a nice day.